गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रॉम 1 से लेके 158 तक है, आपको सारी की सारी याद रखनी है। मिसलिनियस में भले वो मिसलिनियस चैप्टर है, बट आपको मिसलिनियस अच्छे से करना है। जैसे 152, 153, 153 ए अमेंडमेंट से रिलेटेड है। 153 बी बोलता है कि कोर्ट इज सपोज टू बी डीम्ड टू बी एन ओपन कोर्ट वगैरह, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। 144, then 148, 148A, right? These all things you must know very very well. अच्छे से करना। हमने ऑर्डर्स किए थे, ऑर्डर नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ओके, इतने मैंने ऑर्डर्स किए हैं आपके साथ ऑलरेडी, राइट? उसमें मैंने ये भी बताया है। चलो एक बार आप लोग एक काम करिएगा, मार्क द इम्पोर्टेंट रूल्स इन ऑर्डर नंबर 1। पार्टीज टू सूट में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। रूल नंबर 8 आप मार्क कर लीजिएगा, मैं आपको जो बता रही हूँ वो। रूल 8, I'll do it fast, okay? Rule 8, Rule 9, Rule 10 and Rule 13. Okay? Order number 2, Rule 1, Rule 2, Rule 3 and Rule 7. ऑर्डर नंबर 3 आपको सिर्फ ऐसे ही देख लेना है, ओके? बिकॉज इट टॉक्स अबाउट रिकग्नाइज्ड एजेंट्स कि कौन हमारे को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में, ओके? पार्टी को, ये उसके बारे में, सिंपल एज दैट। देन ऑर्डर नंबर 4 सिर्फ 2 रूल्स है कि हम ऐसा कहते हैं कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट होता है सूट। ऑब्वियसली आपको प्लेंट प्रेजेंट करना है, राइट? सो प्लेंट में सारी चीज़ें आपकी बता होनी चाहिए। फिर ऑर्डर नंबर 5, रूल नंबर 1, देन रूल नंबर 5 एक बार देख लीजिएगा। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9A, रूल नंबर 10, देन रूल नंबर 15। ओके, देन गो टू रूल नंबर 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब्सटीट्यूटेड सर्विस, उसको स्टार कर देना। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 20 स्टार इन ऑर्डर नंबर 4, सॉरी ऑर्डर नंबर 5। एंड लास्ट रूल नंबर 30 के कभी कभी कोई ऐसे हाई डिग्निटरी के लोग होते हैं, रैंक्ड पर्सन होते हैं, उनको आप समन भेजने के बदले आप उनको एक लेटर भेज सकते हो एज अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, ओके? देन कम टू रूल नंबर, सॉरी ऑर्डर नंबर 6, प्लीडिंग्स। आप उसमें मार्क कर लीजिए रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, and rule number 15, 16, and most important, rule number 17, amendment of pleading. Order number 7, plaint, कौन से पर्टिकुलर्स मेंशन्ड होने चाहिए प्लेंट में, रूल नंबर 1। फिर उसके बाद डायरेक्टली चाहिए रिटर्न ऑफ प्लेंट, रूल नंबर 10। फिर देन गो टू रूल नंबर 11, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। अब ये 11, 12, 13, व्हेन अ प्लेंट इज रिजेक्टेड, आप लोग को पता है इट इज अ डिक्री, देयरफॉर अपील इज पॉसिबल फॉर इट। So rejection of plaint important, and where plaint is rejected, rule number 13 कहता है it does not preclude from presenting a fresh plaint. Means अगर prelim में question आए कि plaint reject हुआ है, so is there a possibility of presenting a fresh plaint with respect to the same suit? Yes, possibility है, right? So rule number 11, 12, 13 has to be read together. मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग बोला, रूल नंबर 17, ऑर्डर नंबर 6, तो आपको कैसे अच्छी तरीके से, जैसे फ्यू रूल्स तो आपको रटे हुए होने चाहिए। जैसे सब्सटीट्यूटेड सर्विस, ऑर्डर नंबर 5, रूल 20, देन प्लीडिंग्स में ऑर्डर नंबर 6, रूल 17, सिमिलरली ऑर्डर नंबर 7, रूल नंबर 11, ओके? वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे स्टार मार्क कर लीजिएगा। देन गो टू रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, ओके? इसमें फर्स्ट रूल नंबर 1, ओके? फिर ये रूल नंबर 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, राइट? ये आपको पता होने चाहिए, बस, दैट्स इट। अच्छा, दे हैव आस्क्ड इन प्रीलिम वंस सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स, ऑर्डर नंबर 8, रूल नंबर 9, okay? This has come directly in prelim. Subsequent pleading falls under which order and rule? So they have given option. अब आप देखिएगा, they give very smart options in the prelim. अब इसके पीछे subsequent के बाद जो word आता है pleading, and there is an order pleadings,
मीन्स ऑर्डर नंबर 6 क्या है? प्लीडिंग। तो इन्होंने ऑप्शन में है ना ऑर्डर नंबर 6 भी डाला था, तो ऑटोमेटिकली इंसान क्या सोचेगा ना कि यार ये तो प्लीडिंग्स है ना, तो ऑर्डर नंबर 6 में ही फॉल करता है। ओके, बट नो, इट फॉल्स अंडर ऑर्डर नंबर 8. You should know that. Okay, just you will have to know this thing. ऑर्डर नंबर 9 बात करता है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस। पार्टीज अपीयर करते हैं और अगर वो नहीं करते हैं अपीयर, राइट, तो क्या होता है, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। इसमें आप एक बार रूल नंबर 7 और रूल नंबर 13, राइट, ये दोनों चीजें आपको साथ में पढ़नी है। प्रोसीजर where defendant appears on a day of adjournment, okay, and setting aside a decree ex parte against defendant, ये दोनों साथ में हम पढ़ेंगे, राइट। और रूल नंबर 6, प्रोसीजर व्हेन ओनली प्लेंटिफ अपीयर्स, ये क्या बताना चाहते हैं आपको, मैं सिर्फ एक जनरल तौर से बताना चाहती हूँ। ऑर्डर नंबर 9 कि दो पार्टीज होती है, आपको उतना तो पता होता है, प्लेंटिफ होता है, डिफेंडेंट होता है। कभी कभी क्या होता है, प्लेंटिफ अपियर होता है और कभी डिफेंडेंट अपियर होता है, और कभी दोनों ही अपियर नहीं होते हैं। सो अगर वो अपियर हो गए तो क्या होगा, अगर सिर्फ प्लेंटिफ अपियर होगा और डिफेंडेंट अपियर नहीं होगा तो क्या होगा, अगर सिर्फ डिफेंडेंट अपियर होता है और प्लेंटिफ अपियर नहीं होता है तो क्या होता है, या अगर दोनों के दोनों नहीं अपियर होते तो क्या होता है, या अगर दोनों के दोनों अपियर होते तो क्या होता है। सो दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ अपियरेंस एंड नॉन अपियरेंस इन द कोर्ट. That is what it is said in order number 9. Then go to order number 10, examination of parties by the court. फर्स्ट रूल है इसमें, ascertainment whether allegation and pleadings are admitted or denied. जो pleadings होती है, अच्छा pleadings में क्या होता है, plaint is from the plaintiff side and written statement is from the defendant side. So pleadings, whatever is there in the pleadings by both the parties, is it admitted or is it denied? अगर admitted है तो वही का वही suit is disposed in a way, but अगर denied है तो afterwards examination proceedings start. That is what is saying ascertainment whether allegations in the pleadings are admitted or denied, right? फिर क्या होता है, ये मैं आपको, ये बहुत सिंपल ऑर्डर है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। you are all aware that there is one kind of procedure which happens in the court, and there are other proceedings which take place outside the court, so that the suit can be resolved or in a much more easier manner, and there is less harassment of the parties, and even we are saving the court's time. So what the court basically does, it gives the parties an opportunity कि भाई आप लोग out of court यानी कि alternative dispute resolution method use करना चाहते हैं, ADR, जिसमें आपको सबको पता है कौन से होते हैं, arbitration, mediation, है ना, conciliation. Do you wish to resolve by using one of those platforms, one of those forums? तो कोर्ट उनको अपॉर्चुनिटी देती है पार्टीज को। अगर पार्टी बोलती है ओके ठीक है हम करना चाहते हैं उस तरीके से, सो कोर्ट विल सेंड देम देयर। व्हेन द कोर्ट सेंड्स देम देयर, अगर रेजोल्यूशन आ जाता है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं आता है तो यू कैन कम बैक टू द कोर्ट एंड कोर्ट फॉलोज द whatever procedure generally takes place, right? So this is it. I wish to complete till order number 10 today, and the remaining I will do tomorrow. Means I'll be taking every day 1 hour only in this week, and we'll complete all the uh, orders by the end of this week. So I believe till order number 5 we have completed it, right? I even made you mark a few important rules. Just pay attention to that. That's it. I assure you, अगर आप इतना भी अच्छे से याद रखोगे ना, you will be able to eliminate the wrong answer in prelims, right? Pleadings. Order number 6, rule 1, pleadings generally. Pleadings shall include, nahi, I'm sorry, shall mean. It means plaint or written statement. Plaint is what the plaintiff is claiming, and written statement is by the defendant, what he is using as an attack, what he is using as a defense against the claims of the plaintiff. That is the meaning of pleading. See, it is well settled that in the absence of pleading, evidence, if any, which is produced by the parties cannot be considered. It is also equally settled that no party should be permitted to travel beyond its pleading, and that all necessary and material facts should be pleaded by the party in support of the case set by it.
The object and purpose of the pleading is to enable the adversary party to know the case if it has to meet. In order to have a fair trial, it is imperative that the party should state the essential material facts so that the other party may not be taken by surprise. The pleadings, however, should receive a liberal construction. No pedantic approach should be adopted to defeat justice on hair-splitting technicalities. ये मैंने आपको अगर याद है, मैंने स्टार्ट में आप लोग को बताया था कि एक बेयर एक्ट आती है यूनिवर्सल की with good amount of commentaries. Okay, वो hard cover वाली होती है. If you all want, I'll send you all the cover page of that Bear Act right away only, क्योंकि मैं कभी कभी भूल जाती हूँ आप लोगों को भेजने के लिए. I will send it to you right now only. वो वाली जो Bear Act है आप अपने लिए खरीद लीजिएगा, because ये वाली Bear Act में बहुत अच्छी commentaries दी हुई है. So you can always refer to this Bear Act. Fine. And I think yesterday one girl, substantial law, मुझे याद तो है, वो मैंने लगाया है, मैं आपको फिर बताती हूँ. Just hold on, I had a call from someone. Okay, so that is the meaning of pleading. You all should know what is the meaning of pleading. It includes plaint as well as written statement. Pleading to state material facts and not evidence. Obviously, उसमें सिर्फ material facts आप बताओगे. ये direct prelim question. Every pleading shall contain only a statement and concise of the material fact on which the party relies is claiming or defending, as the case may be, but not the evidence. Pleading shall necessarily be divided into paragraph numbered consecutively. Allegation so as far as convenient contained in separate paragraphs. आप लोग सब प्रैक्टिस करते हो, आपको पता ही होता होगा कैसी तरीके से ये सब फॉर्म होता है. डेट, सम, नंबर्स वगैरह ये सब बहुत अच्छी तरीके से आपको मेंशन करना पड़ता है. मटेरियल फैक्ट्स का मतलब होता है प्राइमरी फैक्ट्स, बेसिक फैक्ट्स. और पर्टिकुलर आप प्लीज लिख दीजिएगा, facta probanda is mentioned in the pleadings and not facta probentia. Okay, facta probentia not in the pleadings, but facta probanda. Facta probanda is material facts, that is facts which are required to be proved, and facta probentia are particulars or evidences, the facts by means of which they are proved. They are like a finishing touch, details of the case. So in this we are not mentioning facta probentia. जो प्लीडिंग्स होती है जिसमें हम मेंशन करते हैं क्या क्या चीजें मेंशन करेंगे, उसमें सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स विल बी मेंशन, नॉट पर्टिकुलर्स. Okay, so this is the difference between material facts and particulars. Particulars are something which we are adding on. They're like a finishing touch to what is stated in the material facts, right? Actually, there is a lot to आपको अभी बताऊं इसमें ही. There are two concepts, alternative pleading and inconsistent pleading. अब ये prelim में what we said in pleadings is it consists of material facts only and not particulars. We will add particulars later. So order number 4 says particulars are to be given wherever necessary. Means आप खुद सोचो कि think all this from a logical perspective. जहाँ पे कोई you want to prove some kind of a misrepresentation or some kind of a fraud which has been done against you, or a breach of trust or default, or there was some kind of undue influence being used to get that particular thing in that particular person's favor, right? So in order to explain that, you will have to put particulars. So that is what is rule number 4. Okay, so rule number 4 says that condition precedent. अब what is a condition precedent? कुछ करने के लिए कोई particular चीज होनी चाहिए आपके लिए, right? कार चालू करने means you want to drive, but उसके लिए तो what is the condition precedent? You have to put on the engine, right? So in that same manner, any condition precedent, the performance or occurrence of which is intended to be contested, shall be distinctly specified in his pleading. Whatever condition precedent a person is going to be relying on for a particular matter, that has to be specified. So अगर prelim में आ जाए condition precedent is mentioned under which order and rule, जैसे कि subsequent pleadings आ गया था, so they can even just put simply condition precedent. So you should know condition precedent falls under pleadings. Okay, then departure, denial of contract, effect of a document to be stated, malice, knowledge, all these things, they have to be very much clearly stated in your pleading. See, departure, no pleading shall except by way of amendment, right?
raise any new ground of claim or contain any allegation of fact inconsistent with the previous pleading of the party pleading the same. Right? Means if you want to raise a new ground of claim or allegation, राइट, अगर आप कोई नया ग्राउंड रेज करना चाहते हो या नया एलिगेशन रेज करना चाहते हो, यू कैन ओनली डू इट बाय अ अमेंडमेंट. सो हाउ विल यू रीड इट? नो प्लीडिंग शाल, आप एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट को ब्रैकेट में कर दीजिए और ऐसे रीड करिएगा. नो प्लीडिंग शाल रेज एनी न्यू ग्राउंड ऑफ क्लेम or contain any allegation of fact which is inconsistent with the previous pleading of the party pleading the same, except by way of amendment. आप इस तरीके से ये वाले रूल को रीड करिएगा. What are they saying is you have stated something in the pleading, but now you wish to raise something new. You cannot simply just go and raise it like that way. You will have to go with it by an amendment. So with rule number 7, you read rule number 17. Please go to rule number 17. Order 7, rule number 17. Order 6, sorry, rule number 17, amendment of pleading. The court may at any stage of the proceeding allow either party to alter or amend his pleading in such manner and on such terms as may be just, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real question in controversy between the parties. Proviso that no application for amendment shall be allowed after the trial has commenced. Okay, unless the court comes to the conclusion that in spite of due diligence the party could not have raised the matter before commencement of the trial. So obviously unless तो हर एक जगह पे आ ही जाता है, राइट? कि वैसे तो इन्होंने बोला है कि आपको अमेंडमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो बिफोर द ट्रायल, बट कोर्ट अगेन हैज द डिस्क्रिशन टू ग्रांट यू like an opportunity to make an amendment, but that is only possible when the court feels that even by applying due diligence you could not do it. So departure, condition precedent, denial of contract. If any contract is alleged in a pleading, a bare denial of the same by opposite party shall be construed only as a denial in fact and all. ये सारे चीजें आपको pleadings में mention करनी है, यही बता रहे हैं. Effect of document to be stated, malice knowledge, wherever it is material to allege that there is a malice, fraudulent intention, knowledge of or other condition of the mind of any person, it shall be sufficient to allege the same as a fact. State it as a fact. Basically you have to state everything as facts over here. That is what they are trying to say. Denial of contract, effect of document to be stated, malice knowledge, notice, wherever it is material to allege a notice to any person of any fact, material thing, it shall be sufficient to allege such notice as a fact. So state everything as a fact. That is what they are trying to say. Implied contract or relation, these all things need to be stated in the pleadings. Presumption of law, pleadings have to be signed, which we all know that, right? Then address for service of notice, कहाँ पे कौन से एड्रेस पे भेजेंगे, वो registered address है, right? तो ये आप देख लीजिएगा. एड्रेस, द एड्रेस फर्निश्ड इन द स्टेटमेंट मेड अंडर सब रूल 1 shall be called the registered address and shall until duly changed as aforesaid be deemed to be address of the party for the purpose of service of all processes in the suit or in an appeal from any decree or order therein made and for the purpose of execution, and shall hold good subject as aforesaid for a period of 2 years after final determination of the cause or matter. यानी कि जो आपका registered address है, that stays into force for at least 2 years. That is what they are saying. Where the registered address of the party is discovered by the court को ऐसे लगता है कि वो incomplete, false या fictitious है, the court may either on its own motion or on application of the party order क्या कर सकती है. In a case where such a registered address was furnished by a plaintiff, अगर plaintiff ने ये गलत address prove किया था, means state किया था, तो it will stay the suit. In case where the registered address was furnished by the defendant, उसका डिफेंस जो होगा वो स्ट्रक आउट करेगा, यानी कि स्ट्राइक आउट कर दिया जाएगा, एंड ही बी प्लेस्ड इन द सेम पोजीशन एज इफ इट ही हैड नॉट पुट अप एनी काइंड ऑफ डिफेंस. ऐसा ही माना जाएगा कि उसने कोई डिफेंस लिया ही नहीं था. Where a suit is stayed or defense is struck out under sub rule 1, the plaintiff or as the case may be the defendant may, after furnishing his true address, apply to the court for the order to be set aside, the order of stay, or as the case may be the order of striking out the defense. Right? The court is satisfied if the party was prevented by any sufficient cause from filing the true address, shall set aside the order of stay or the order of striking out the defendant on such terms as the cost or otherwise as it thinks fit, and shall appoint a day for proceeding. Nothing in this rule shall prevent the court from directing a service of process at any other address if for any. तो
ये वाला जो रूल है ना, रजिस्टर्ड एड्रेस का इंपॉर्टेंस बताता है कि वो रजिस्टर्ड एड्रेस कितना इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपने वो रजिस्टर्ड एड्रेस आपने फॉल्टी दिया हो, अगर आप प्लेंटिफ हो तो स्टे किया जाएगा, अगर आप डिफेंडेंट हो तो ऐसा करा जाएगा, स्ट्राइक आउट कर दिया जाएगा आपका डिफेंस। बट स्टिल कोर्ट इज लीनियंट, कोर्ट इज जेनरस, तो कोर्ट आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि भाई सफिशिएंट कॉज प्रूव करिए आप कोर्ट में आके और बताइए आप क्यों ट्रू एड्रेस नहीं दे पाए थे। वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स, बस एफिडेविट प्लस प्लीडिंग आपको देनी चाहिए, बस यही है इसमें। द पर्सन वेरिंग द प्लीडिंग शैल ऑल्सो फर्निश एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ हिज प्लीडिंग, बस इतना एक याद रखिएगा। 15. Strike out the pleadings. Court may at any stage of proceedings strike out or amend any matter in any pleading which is unnecessary, scandalous, frivolous, vexatious, prejudicial, embarrassing or delaying the fair trial of the suit or bringing about an abuse to the process of the court. Amendment of pleading 17 बोलता है कि आप कर सकते हो, very very important for prelims, means डायरेक्ट बहुत लंबा क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें, इतना छोटा रूल है। बट आप जब मेंस के लिए ऑब्वियसली तैयारी करते हो तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन की जाती है। ओके, फिर इसके बाद आप कीजिएगा 17 के बाद आता है ऑर्डर 7, ऑर्डर 6, रूल नंबर 17 के ऊपर तो बहुत पूरा एक पीएचडी टाइप है, बट इट्स ओके राइट नाउ फॉर prelim and Gujarat Judicial Services. How much you are supposed to know is just this much, कि what is the thing of order number 6, rule number 17. Rule number 18, अगर failure कर आप you have failed to amend even after an order has been given. If a party who has obtained an order for leave to amend does not amend it within the time limited for the purpose by the order, or if no time is limited, then within 14 days from the date of the order. अगर कोई टाइम लिमिट नहीं दिए तो the general time period is 14 days. He shall not be permitted to amend after the expiration of such limited time as aforesaid or of 14 days as the case may be, unless the time is extended by court. Okay, so this is what it is said. Rule number 17, rule number 18, please remember. इसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी है, दो तीन चीज़ें। एक कॉन्सेप्ट है रजिस्टर्ड एड्रेस का, एक कॉन्सेप्ट है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स का, और एक अगर आप फेल करते हो अमेंड करने के लिए तो उसमें एक टाइम फ्रेम दिया है 14 दिन। सो मिनिमम पीरियड इज 14 डेज। ओके, और उसके अलावा आपको पर्टिकुलर्स और मटेरियल फैक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि यू स्टेट फैक्टा प्रोबेंडा एंड नॉट फैक्टा प्रोबेंशिया। फैक्टा प्रोबेंडा is material facts and facta probentia is particulars or evidences, right, which are like they are like touching on the material facts. Now coming to order number 7, plaint कौन present करता है? plaintiff. तो particulars कौन से होंगे plaint में? the name of court, ये सब आपको थोड़ा अपने आप ही याद रखना है। residence of the plaintiff, residence of the defendant, then if he's a minor or unsound mind का जो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है तो वो एक स्टेटमेंट होना चाहिए कि भाई मैं ऐसा हूँ, नहीं तो कॉज ऑफ एक्शन। फिर द फैक्ट्स शोइंग दैट द कोर्ट हैज़ jurisdiction, the relief which the plaintiff is claiming, where the plaintiff has allowed a set off or relinquished a portion of the claim, the amount so allowed or he is relinquishing, a statement of value of the subject matter of the suit for the purpose of jurisdiction of the court fee. So ये सारी की सारी चीज़ें आपको डालनी है अपने प्लेंट में। अगर मनी सूट है तो मनी सूट में एग्जैक्ट अमाउंट जो क्लेम कर रहे हैं वो होना चाहिए, बट वेयर द प्लेंटिफ्स इज सुइंग फॉर अ मैसने प्रॉफिट और फॉर एन अमाउंट विच विल बी फाउंड ड्यू टू हिम ऑन अनसेटल्ड अकाउंट्स between him and the defendant, or for movables in possession of the defendant, or for debts, right? तो approximate amount, right? एक recovery of money को है, सपोजिंग रिकवरी ऑफ मनी है तो एग्जैक्ट कितना रिकवर करना है वो, नहीं तो मैसने प्रॉफिट, अनसेटल्ड अकाउंट, मूवेबल्स है और डेप्स है। इसमें 4-5 चीजें एक्चुअली बता रही है जो रूल नंबर 2 है। तो आप रूल नंबर 2 में 2 एरोस कर दीजिएगा, एक तरफ रिकवरी ऑफ मनी कर दीजिए और नीचे 4 चीजें हैं, मैसने प्रॉफिट्स, अनसेटल्ड अकाउंट्स, मूवेबल्स और डेप्स। अगर रिकवरी ऑफ मनी है तो एग्जैक्ट अमाउंट आपको स्टेट करना है और ये 4 चीजों में अप्रोक्सीमेट अमाउंट। वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि घर वगैरह है, राइट, तो जैसे तो उसका प्लॉट नंबर वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ेगी। व्हेन प्लेंटिफ सूज एज अ रिप्रेजेंटेटिव, राइट, तो ये भी है वे प्लेंटिफ सूज इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, जैसे कि एलआर वगैरह हो। द प्लेंट शैल शो नॉट ओनली दैट ही हैज एन एक्चुअल एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर बट ही हैज आल्सो टेकन स्टेप्स
for instituting this suit. फिर defendant's interest and liability to be shown, grounds of exemption from limitation law, relief to be specifically. अभी इसका मतलब क्या है? defendant's interest and liability to be shown, कि उसको आपको बताना है, आपके अपने प्लेंट में प्लेंटिफ को बताना है कि भाई डिफेंडेंट एक्चुअली लायबल है ये सब चीज़ों के लिए. फिर ग्राउंड, अगर लिमिटेशन पीरियड के अंदर हो या बाहर हो, तो यू हैव टू शो that we are within the limitation period, or we have अगर हम limitation period से बाहर है तो हमें ये भी बताना है कि due to what sufficient reason you have not been able to file the suit within the limitation. Then relief to be specifically stated, obviously whatever relief you are wanting from the court, right? So you will have to state it specifically. Relief founded on separate grounds, तो आपको हर एक different relief अगर आप state करते हो, right? Where the plaintiff seeks relief in respect of several distinct claims or several causes of action founded upon several and distinct grounds, they shall be stated as far as may be possible distinctly and separately. Now ये देखो, ये important है. Procedure on, अभी ये सब plaint में आपने ये सब चीजें तो डाल दी, फिर admission होगा. So where the court orders that the summons be served on the defendant in the manner provided under Order 5, Rule number 9, it will direct the plaintiff to present as many copies of the plaint on plain paper as there are defendants. कितने days में? Within 7 days. Within 7 days from the date of such order, along with requisite fees for the service of summons on the defendants. Okay? तो ये बहुत जरूरी है. Within कितने days? 7 days आपको भरना पड़ेगा. Guys, मैं आपको simple language में बताती हूँ. आप है ना, ये सीपीसी को है ना, सबसे पहले तो दिमाग में ऐसा मत लेके चलिए कि ये बहुत बड़ी एक्ट है, कितने सारे ऑर्डर्स है, कितने सारे रूल्स है. आप ये अपने दिमाग में से फर्स्टली निकाल दो. आई नो इट इज वेरी लेंथी, बट स्टडी इट लाइक गेम तरीके से ही पढ़िए. मीन्स आपको बहुत ईजी लगेगा. हमने ये वाला जो ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर 7, व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट? प्लेंट. तो पहले आप सोचिए ना, इन्होंने स्टार्टिंग के रूल्स में क्या बताया कि प्लेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी. फिर उन्होंने क्या बोला कि हम, अच्छा आपने बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस एंड जो भी चीजें आपको डालनी थी आपने फॉलो किया, तो हम आपके प्लेंट को एडमिट कर रहे हैं. तो एडमिशन ऑफ प्लेंट. अच्छा, प्लेंट को आपने अच्छी तरीके से फॉलो नहीं किया उसके पर्टिकुलर्स, तो देयर इज रिटर्न ऑफ प्लेंट. तो रिटर्न ऑफ प्लेंट में क्या होता है? द प्लेंट एट एनी स्टेज ऑफ सूट बी रिटर्न टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट इन विच द सूट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड. तो आप वहां पे रिटर्न करोगे. फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट, इट इज हियरबाय डिक्लेयर्ड दैट द कोर्ट ऑफ अपील और रिवीजन में डायरेक्ट आफ्टर सेटिंग असाइड द डिक्री पास्ड इन अ सूट द रिटर्न ऑफ प्लेंट. प्रोसीजर ऑन रिटर्निंग ऑफ द प्लेंट, तो क्या प्रोसीजर होगा? ब्रीफ स्टेटमेंट, क्यों रिटर्न कर रहे हैं वगैरह. पावर ऑफ द कोर्ट टू फिक्स अ डेट ऑफ अपीयरेंस इन द कोर्ट वेयर द प्लेंट इज फाइल्ड टू बी रिटर्न टू बी फाइल्ड. तो वही सब पावर. ये भी आता है ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 10, ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 9, एडमिशन ऑफ प्लेंट, रिटर्न ऑफ प्लेंट, राइट. ये सब आप एक बार, एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो दीज 3 रूल्स, ऑर्डर नंबर 9, ऑर्डर नंबर 10, ऑर्डर नंबर 11, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, रूल नंबर 11. ओके, ये आया है मेंस में, बहुत अच्छी तरीके से आया है. रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, क्यों प्लेंट रिजेक्ट होता है? सिंपल तरीके से आप लिख दीजिए ABCD जहां पे लिखे हैं. A, कॉज ऑफ एक्शन. B, रिलीफ इज अंडर वैल्यूड. C, इनसफिशिएंट स्टैम्प्ड. D, टाइम बार्ड. E, आपने डुप्लीकेट में फाइल नहीं किया है. एंड F, राइट, वेयर द प्लेंटिफ फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ रूल नंबर 9. रूल नंबर 9 क्या कहता है? प्लेंट एडमिट हुआ, बट it will be directed to the plaintiff कि to present as many copies of the plaint on plain paper as there are defendants within 7 days. आपने ये वाला रूल आपने फॉलो नहीं किया, so automatically your plaint will be rejected. मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता देती हूँ. इसमें आपने A के बगल में कॉज ऑफ एक्शन लिख दिया ना, COA लिख दीजिए, मीन्स आपने कॉज ऑफ एक्शन को प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किया. बी क्या कहता है? रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड, मीन्स जो आप रिलीफ क्लेम कर रहे हो कोर्ट के पास से, मीन्स यू हैव नॉट स्टेटेड द एस्टिमेटेड वैल्यू प्रॉपरली, इट इज अंडर वैल्यूड. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर रिजेक्टिंग योर प्लेंट. थर्डली, जो स्टैम्प लगाना होता है, राइट, रिक्विजिट स्टैम्प पेपर जो होता है, which a person is supposed to be filing,
You haven't done that. So what is it? It is insufficiently stamped. So that is why also your plaint is rejected. Fourth, time barred hai. No, sorry, it's not time barred, guys. It is barred by any law. So it can be any law. I'm very sorry over here. It is not only time barred, it is barred by any law. So it can be barred by the limitation law. It can be barred by any kind of laws which are existing in India or elsewhere. They have specifically said any law, right? So I presume over here it can be any law. Okay. एंड आपको डुप्लीकेट में फाइल करना होता है प्लेंट. ऑर्डर फॉर रूल 1 ऐसा ही कहता है, बट आपने नहीं फाइल किया प्लेंट, सो ऑटोमेटिकली योर प्लेंट विल बी रिजेक्टेड. एंड रूल नंबर 9 ने बोला जब आपका प्लेंट एडमिट होता है, ऑर्डर नंबर 7 रूल 9 क्या कहता है, व्हेन योर प्लेंट इज एडमिटेड, तो व्हाट हैपेंस इज यू आर सपोज टू गिव द सेम नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द प्लेंट विद इन 7 days so that we can give it to the defendants, but you did not do that. So your plaint will be rejected. Proviso: at the time fixed by the court for correction, the valuation or for the supplying the requisite stamp fee shall not be extended, right? Unless the court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of exceptional nature for correcting the valuation or supplying the requisite stamp paper, as the case may be, within the time fixed by the court, and that refusal to extend such time would cause injustice to the plaintiff. Okay. Rule number 9, rule number 10, rule number 11. Okay, a very important thing to know with rejection of plaint is that rule number 11, order 7 is deemed to be a decree under section 2(2), right? और आपको ये भी पता है, because it is a decree, it is appealable. So order which rejects a plaint is appealable. Fine. ये दो points आप याद रखना. Procedure क्या होता है after you have rejected the plaint? Where a plaint is rejected, judge shall record an order कि क्यों इसने reject किया है, reasoned order. Where rejection of plaint does not preclude presentation of fresh plaint, it shall see the rejection of plaint on any grounds herein before mentioned shall not of its own preclude the plaintiff for presenting a fresh plaint in respect of the same cause of action. Okay, means you can file a fresh suit. Acha, rule number 14, just for your knowledge, production of documents on which the plaintiff sues or relies. Obviously, you have to produce all those documents, right? But nothing in this rule shall apply to document produced for cross-examination of plaintiff's witnesses or handed over to a witness for merely refreshing his memory. तो ये वाले आपको documents provide नहीं करने हैं, ये वो कह रहा है सब rule 4. फिर इसके बाद ये सब चीजें not necessary. Okay. काजल वगैरह आपको समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, Hello. जी जी. Kajal, she is very regular, so I am taking her name. Yes, ma'am. आ रहा है समझ में. I can't hear you. Type. आ रहा है समझ में. समझ आ रहा है ना? आप टाइप कर सकती हो. I'm going a little fast because I have to complete it, but I am just trying to make things more simple with you all. प्लेंट में बस आप इसमें 4 चीजें याद रखिए. ऑर्डर नंबर 7 में पहला पोर्शन उन्होंने बताया है कि प्लेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, क्या आपको देना है, क्या नहीं देना है. उसके बाद उन्होंने आपको बताया रूल नंबर 9 में कि प्लेंट एडमिट होता है, राइट? फिर उसको जब एडमिट होता है 7 दिन के अंदर आपको कॉपीज ऑफ प्लेंट वगैरह सो दैट इट कैन बी प्रोवाइडेड टू द डिफेंडेंट आपको कोर्ट में आके सबमिट करनी पड़ती है. रूल नंबर 10 बोलता है रिटर्न ऑफ द प्लेंट सो दैट यू कैन रिटर्न इट टू द कोर्ट वेयर इट इज सपोज टू बी एक्चुअली फाइल्ड. Then rule number 11 talks about rejection of plaint, wherein it has stated certain number of reasons why a plaint can be rejected. जैसे undervalued stamp, it is barred by any law. फिर आपने जो आप relief claim कर रहे हो, you have not stated it well. Then maybe you have not observed rule number 9. Then your cause of action, you have not stated it properly, right? So all these few
reasons you will there are certain reasons which will be leading to rejection of a plaint. इसके अलावा जब plaint reject होता है, so we know it is a deemed decree under section 2(2), right? So it is appealable, right? Besides that, when a plaint is rejected, does it preclude you from filing a fresh suit? No, it does not preclude you. Okay, so rule number 9, 10, 11, 12, 13, you must know. Then there are certain documents which you are relying. The next portion of this order says that there are certain documents which you rely or which you allege or whatever, right? Obviously, you have to provide it to the opposite party, but definitely there are certain documents which you do not need to provide. That is also which has been stated. उसके अलावा आपको इसमें और कुछ याद नहीं करना है. रिटन स्टेटमेंट, जैसे ऑर्डर नंबर 8 क्या बात करता है? रिटन स्टेटमेंट. जैसे ऑर्डर नंबर 7 plaint, that comes from the plaintiff. Written statement comes from the defendant. The defendant shall within 30 days from date of service of summons on him present a written statement of his defense. Proviso that where the defendant fails to file the written statement within the said period of 30 days, he shall be allowed to file the same on such other day as may be specified by the court for reasons to be recorded in writing, but which shall not be later than 90 days from the date of service of summons. यानी कि total 90 है, not 90 plus 30. Right? It is 30 plus 60. So maximum 90 days hai. There is a confusion people generally have that is it 90 plus 30 or is it 30 plus 60? It is 30 plus 60. Because clearly they are saying it shall not be later than 90 days from the date of service of summons. ऊपर देखिए ना, it shall within 30 days from date of service of summons. यानी कि अगर आज समन्स इश्यू हुआ है तो आज से हम 90 दिन काउंट करेंगे. तो पहले तो 30 दिन आपको दिए ही थे, तो उसमें 60 दिन और ऐड कर दीजिएगा. सो टोटल यू आर गेटिंग 90 days, right? We know, we learned what is pleading. Pleading means plaint and written statement. So just like plaint is a pleading from the plaintiff's side, written statement is a pleading from the defendant's side, and it is an answer, it is a reply to the plaintiff's plaint. Okay, now 1A talks about duty of defendant to produce the documents upon which relief is claimed or relied upon him. Similar हमने पहले जो plaint में पढ़ा. New facts must be specifically pleaded. Right? He has to state whatever defense he is taking. If there is any kind of set off, is there any kind of counter claim, is there any point of law which he is trying to state, that all he has to state. Denial has to be specific, obviously not beating around the bush. If he is denying something, he has to be on the point, right? ये है ना, थोड़ा इन्होंने ऐसे ही फालतू का डाल दिया है. Denial to be specific, evasive denial, specific denial, right? तो as means you have to you can't be evasive in your talks. You cannot say कि ऐसा नहीं है. This is something which is very evasive. You have to be जो भी substance पे आप state करना चाहते हो point, it has to be to the point. You cannot be evasive in whatever you are stating in your written statement. Specific denial means you have to यहाँ देखो, if you go to see 3, 4, 5, these all look similar only. What are they saying? Denial to be specific. और यहाँ पे कहता है specific denial. Means when I was trying to study, I used to also feel that, अरे what is all this? Denial to be specific, evasive denial, specific denial. They all look the same only to us, right? That's it. इसमें important आता है rule number 1, then rule number 6. अभी इसमें set off generally होता है with respect to recovery of money. What you have to remember in this, supposing if there are two parties, मैंने आपसे लिए थे 1 लाख रुपए, ओके, और आपने मुझसे लिए थे कुछ 90 लाख रुपए, 90,000, और उसके बाद आपको means I have filed a suit or you have filed a suit against me that I have to return to you 1 lakh rupees, but there is certain amount which you also owe me, right? So that amount will be set off and the remaining amount I have to pay you. That is what they are saying. In simple language, where a suit is for recovery of money, defendant claims to set off against the plaintiff. Demand, see, इसमें सबसे keywords है, a certain sum of money होना चाहिए, which is first, आप है ना points लिख दीजिए ऊपर. A certain sum of money, point number 1. Secondly, legally recoverable by him from plaintiff, point number 2. Point number 3, not exceeding the pecuniary limits of the jurisdiction of the court.
Point number 4, both the parties to fill the same character as they fill in the plaintiff's suit. And 5th, the defendant may at the first hearing of the suit but not afterwards, unless permitted by the court, present a written statement containing the particulars of debt sought to be set off. To recovery of money, right? Debt to be set off. Defendant, but plaintiff, there are two parties, A and B. A is the plaintiff, B is the defendant. A files a suit against B. A files a suit against B for 1 lakh rupees. Okay, that you have to pay me 1 lakh rupees, but means B has to pay A 1 lakh rupees, but B also owes certain amount of money to A also owes certain amount of money to B. So यहाँ पे जब written statement file करता है defendant, तो उसमें वो particularly claim state कर देता है कि plaintiff also owes me some amount of money. So please you set that off, and the remaining amount I will pay you. That is the meaning of set off. Effect of set off: the written statement shall have the same effect as a plaint in a cross suit, so as to enable the court to pronounce a final judgment in respect of both the original claim and of the set off. But this shall not affect the lien upon the amount decreed of any pleader in respect of the cost payable to him. The rules written in a written statement by a defendant apply to a written statement in answer to claim of settled. जो भी balance बचता है उसके ऊपर डिक्री प्रोनाउंस होता है. Okay, that's it. Otherwise जो भी amount होता है उसको हम set off कर देते हैं. I'm again sending you a little bit of a write up which you all can refer to for set off and counter claim. जस्ट ओपन योर मीन्स आपके व्हाट्सएप चैट में मैंने भेजा है, देख लीजिए. मैं उसी में से बता देती हूँ व्हाट इज सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम. इट इज मच मोर इजियर. Set off, it is a claim set up against another. It is a cross claim which party offsets the original claim. It is a plea in defense available to a defendant. By adjustment, set off either wipes out or reduces the plaintiff's claim in a suit for recovery of money. The right of set off is recognized under Order 8, Rule number 6. It obviates the necessity to file a fresh suit by the defendant. Even if plaintiff's suit is dismissed, a defendant may claim a set-off. Counterclaim, a claim made by the defendant in a suit against the plaintiff. It is a claim independent of and separate from the plaintiff's claim, which can be enforced by cross action. It is a cause of action in favor of the defendant against the plaintiff. 6A से लेके 6G तक है. A defendant in a suit may, in addition to his right to plead set off, set up a counter claim also. It may be set up only in respect of a claim for which a defendant can file a separate suit. It is substantially a cross action. Counterclaim has effect of cross suit, and a court can pronounce judgment both on original claim as well as counterclaim. The counterclaim of the defendant will be treated as a plaint. Okay, ये जो मैंने इतना जो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम से लेके मैंने यहाँ पे आपको भेजा है पिक्चर, आप उतना भी याद रखोगे, सफिशिएंट है. सेट ऑफ इज अ डिफेंस to the plaintiff's action, and it is a cross claim, and counter claim is a cross action. It is a cross suit. A set off is a shield. A cross claim is a sword. It must be for a certain sum of money or must arise out of the same transaction, and counter claim need not arise out of the same transaction. It is an attack. 6A, counterclaim by defendant. A defendant in a suit may, in addition to his right of pleading a set-off under Rule 6, set up by way of counterclaim against the claim of the plaintiff any right or claim in respect of a cause of action accruing to the defendant against the plaintiff, either by or after filing of the suit, but before the plaintiff has delivered his defense or before the time limited for delivering his defense has expired, whether such counterclaim is in the nature of a claim for damage or not. Proviso that such counterclaim shall not exceed the pecuniary limits of the jurisdiction of the court. Secondly, the counterclaim shall have the same effect as a cross suit
so as to enable the court to pronounce a final judgment in the same suit, both on the original claim and on the counterclaim. The plaintiff shall be at liberty to file a written statement in answer to the counterclaim of the defendant within such period as may be fixed by the court, and the counterclaim shall be treated as a plaint which is governed by the rules applicable on plaints. So this is like a जो counterclaim होता है ना, it is a kind of a plaint only on the behalf of the defendant. So plaintiff has a right of written statement against it. राइट अभी ये थोड़ा आप देख लीजिएगा. काउंटर क्लेम टू बी स्टेटेड, एक्सक्लूजन ऑफ काउंटर क्लेम, इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ सूट, राइट, नॉट नीडेड. सब्सिक्वेंट प्लीडिंग आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, जो भी like no pleading subsequent to a written statement of a defendant, right, other than by way of defense of set of a counterclaim shall be presented, except by leave of the court and upon such terms as the court thinks fit. But the court may at any time require a written statement or an additional written statement from any of the parties and fix a time of not more than 30 days from presenting the same. So that is known as subsequent pleading. A procedure when party fails to present written statement called for by the court. So what happens where any party from whom a written statement is required under Rule 1 or Rule number 9 fails to present the same within the fixed period, as the case may be, the court shall pronounce judgment against him or make such order in relation to the suit as it thinks fit, and on the pronouncement of judgment a decree shall be drawn up. So order number 8 में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रिटन स्टेटमेंट, फिर उसके अलावा सेट ऑफ और काउंटर क्लेम. Right, set off is something which arises out of the same transaction, and obviously it is a shield which is available to a defendant. But a counterclaim, it does not arise out of the same transaction. It is a sword. It is also available to the defendant, and the defendant plays it against the plaintiff. And it, with respect to a counterclaim, the same rules which are applicable to a plaint will be applicable to a counterclaim. And then a plaintiff also has the opportunity to file a reply against this counterclaim, so that when he files a reply, the rules of written statement are applicable on it. अभी ये जो order number 9 है, appearance of parties and consequence of non-appearance. Parties to appear on day fixed in summons for defendant to appear and answer. Dismissal of the suit when summons not served in consequence of plaintiff's failure to pay the cost. See, Rule 1 talks about appearance. It clearly states that summons में जब date दी है appear होने के लिए, तो the parties have to appear. But अगर plaintiff ने कॉस्ट पे नहीं किए, जैसे कोर्ट फी, पोस्टल चार्जेस वगैरह वगैरह, सो कॉपीज उसने प्रोवाइड नहीं की अंडर ऑर्डर 7 रूल 9, कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द सूट इज डिसमिस्ड, राइट. सो ये सारी रूल 2 टॉक्स अबाउट डिसमिसल ऑफ द सूट. रूल 3, neither party appears, that is also talking about dismissal. So court makes an order, dismissal order. Rule 2 also talks about dismissal order. Rule 3, दोनों पार्टी अपीयर नहीं हुई, सो डिसमिसल ऑर्डर. प्लेंटिफ में ब्रिंग फ्रेश सूट और कोर्ट में रिस्टोर सूट टू फाइल. सो अगर सूट डिसमिस हुआ है रूल 2 या रूल 3, रूल 2 में तो प्लेंटिफ की भूल की वजह से डिसमिस हुआ है, क्योंकि प्लेंटिफ ने जो कॉस्ट भरने थे वो सारे उसने कॉस्ट नहीं भरे, राइट. सो उस वक्त क्या होता है, आपका सूट डिसमिस हो जाएगा. और रूल 3 में तो उन्होंने बोला ही है कि दोनों पार्टी आती नहीं है तो भी डिसमिस होता है. सो यहाँ पे प्लेंटिफ मे ब्रिंग अ फ्रेश सूट, नहीं तो कोर्ट कह सकती है कि यू कैन रिस्टोर द सूट जो हमने डिसमिस किया है. मींस यू कैन अप्लाई टू द कोर्ट टू सेट असाइड द डिसमिसल, एंड देन कोर्ट में मेक सच एन ऑर्डर. दैट इज रूल नंबर 4. Rule number 5 says dismissal of suit where plaintiff after summons is returned unserved fails for 7 days to apply for fresh summons. यानी कि अगर समन नहीं पहुंचा है पर 7 दिन तक प्लेंटिफ चुपचाप बैठा है, उसने कुछ नहीं किया है. So whereafter a summon has been issued to defendant or to several defendants and returns unserved, the plaintiff fails for a period of 7 days from return made to the court or the officer to the court by the officer ordinarily certifying the court, right, to apply for the issue of fresh summons. The court shall make an order that the suit be dismissed. तो यहाँ पे भी dismissal होगा, dismissed as against such defendant until plaintiff has within the time period satisfied the court that he has failed
with best endeavor to discover the residence of the defendant, that the defendant is avoiding the service of process for any other sufficient cause. तो उसकी वजह से फिर कोर्ट में extend the time, and in such a case the plaintiff may bring a fresh suit अगर dismiss हुआ है तो. Procedure when only plaintiff appears. तो इसमें तीन चीजें हैं. When summon is duly served, plaintiff तो आया है and summon was also served, तो you will hear the case suit ex parte. When summon was not duly served, right, it is not proved that the summon was duly served, that the court shall direct a second service of summons. आप second summons issue करिए. Now when summons was served but not in due time, so you will postpone the hearing. Now where it is owing to the plaintiff's default that the summon was not duly served or was not served in sufficient times, the court shall order the office plaintiff to pay the cost occasioned by the postponement. तो plaintiff की अगर भूल है तो आप उसको कोर्ट को plaintiff को कोर्ट में पैसे देना पड़ेंगे. Now only defendant appears. तो क्या होगा? Firstly, dismiss होगा suit against the defendant or admission by the defendant of the claim. तो defendant अच्छा आदमी है, वो आके बोलता है भाई I admit the claim. So the court will pass a decree against the defendant, but only if a part of the claim is admitted by the defendant, dismiss the remaining part of the suit. Right? इसमें दो चीजें हैं. Either you will dismiss the entire suit, और अगर admit करता है defendant, तो there will be a decree which is passed against the defendant. But out of the claim, he only admits a part of the claim. Part नहीं admit करता है. तो जो पार्ट एडमिट नहीं करता है, राइट, उतने पार्ट को हम डिसमिस करेंगे. डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट बार्स द against plaintiff by default bars fresh suit. Where a suit is wholly or partly dismissed under rule number 8, the plaintiff shall be precluded from bringing a fresh suit in respect of the same cause of action. But he may apply for an order to set the dismissal aside, and if he satisfies the court that there was a sufficient cause for his non-appearance when the suit was being called out for hearing, the court shall make an order setting aside the dismissal upon such terms as to cause or otherwise as it thinks fit, and shall appoint a day. Okay. In this nothing more is there, guys. We will still see rule number 13, very important. Setting aside decree ex parte against the defendant. In a case in which a decree is passed ex parte against a defendant, हमने पढ़ा ना rule number 6, when summon was duly served, the court may make an order that the decree that the suit be heard ex parte. तो इसमें क्या हुआ? In a case in which a decree is passed ex parte against the defendant, he may apply. यहाँ पे he may apply कौन है? Defendant may apply to the court by whom the decree was passed for an order to set aside the decree. And if he satisfies the court that the summon was not duly served or that he was prevented by sufficient cause from appearing when the suit was being called out for hearing, the court shall make an order setting aside the decree as against him upon such terms as to cause payment into the court or otherwise as it thinks fit, and shall appoint a day for proceeding with the suit. Proviso that where the decree is of such nature that it cannot be set aside as against the defendant, only it may be set aside as against all other or any of the other defendant. Proviso further that no court shall set aside a decree passed ex parte merely on the ground that there has been an irregularity in service of summons, if it is satisfied that the defendant had notice of the date of hearing and had sufficient time to appear and answer the plaintiff's claim. When there has been an appeal against a decree which is passed ex parte under this rule, and the appeal has been disposed of on any ground other than the ground the appellant has withdrawn the appeal, no application shall lie under this rule for setting aside the ex parte decree. ये रूल नंबर 13, इसमें बहुत क्लियरली इन्होंने बताया है कि अगर डिक्री पास की गई है एक्स पार्टे डिफेंडेंट के अगेंस्ट, तो डिफेंडेंट के पास अपॉर्चुनिटी है कोर्ट को सेटिस्फाई करने के लिए और बताने के लिए कि भाई मेरे पास है ना वो समन, वो ड्यूली इट हैड नॉट बीन सर्व्ड अपॉन मी, I had not received it, or that he was prevented from due to any sufficient cause from appearing in the court when the suit was being called out. फिर कोर्ट को लगेगा if the court is satisfied, then it will appoint a day for proceeding with the suit. और obviously cost तो लगाएगी, right? Now there are many defendants, right? So obviously you have to get the consent of other defendants also. That is first proviso. Second proviso क्या कहता है? It has made it clear
that ke by defendant just cannot come and give any kind of reasons that there was this particular irregularity and I could not attend to the summons. He has to prove it to the satisfaction of the court. That is what they're saying. And court means the CPC has clearly stated that if the defendant had the opportunity of taking notice as well as it had the sufficient time to appear and answer the plaintiff's claim, then we will not set aside the decree. Simply on that. Now, एक्सप्लेनेशन क्या कहना चाहता है कि अपील की गई है अगेंस्ट द एक्स पार्टे डिक्री, ओके, देन यू कांट अप्लाई फॉर अ set aside of the decree. You're understanding this? Means if there has been an appeal against this ex parte decree, then you cannot come and state that please set aside this decree which was passed against me. That is what it is simply saying. अब इसमें कुछ रेमेडीज अवेलेबल है एक्स पार्टे डिक्री को सेट असाइड करने की। रेमेडी सबसे पहली तो है ऑर्डर 9 रूल नंबर 13, देन रिवीजन कर सकते हो अंडर सेक्शन नंबर 115, देन अपील कर सकते हो अंडर सेक्शन नंबर 96 एंड देन रिव्यू भी कर सकते हो, नहीं तो तुम एक सूट फाइल कर सकते हो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फ्रॉड। सो दीज अबव रेमेडीज यू कैन टेक into consideration for setting aside the ex parte decree. Now, no decree to be set aside without notice to the opposite party. Obviously, you have to give the opposite party a notice that we are going to set aside this decree. अब मैंने आपको ऑर्डर 10 बताया दिया था, एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज बाय द कोर्ट। तो जो भी एलिगेशंस होती है उसको आप इधर देखोगे कि वो एडमिट की गई है या डिनाई की गई है। रूल 1A 1B 1C सिंपल बात कर रहा है, कोर्ट आपको अपॉर्चुनिटी देगी कि आप ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस जो है सारे, जैसे कि मीडिएशन, लोक अदालत है या आर्बिट्रेशन, वुड यू लाइक टू गो फॉर दैट? कोर्ट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी, बट एंड देन इफ यू चूज द फोरम, वेल एंड गुड। बट अगर वहां से कोई आपको रिलीफ नहीं मिलता है, if there is any failure of efforts of conciliation, you can come back before the court and the court will hear you. That is 1C. फिर oral examination होती है, that is talking in the rule number 2. And then whatever examination is done, that is reduced into writing. क्यों? क्योंकि एक record form करेगा। Consequence of refusal or inability of the pleader to answer, right? अगर the pleader जो आता है, he refuse or is unable to answer any material question with respect to the suit which the court is of the opinion the party whom he represent, he ought to answer. Means pleader को जरूरी है वो आंसर देने के लिए। The court may postpone the suit to a day not later than 7 days from the first date of hearing and will direct the party to appear in person. If the party fails without lawful excuse to appear in person on the day so appointed, the court may pronounce judgment and or make an order. Judgment नहीं तो order दे सकती है। So order number 10 तक is very very clear, very very simple, right? It goes very very systematically. In fact, first it talks about parties to the suit, then framing of the suit, then pleaders, right? फिर institution of the suit, है ना? So if you go to see, it's going very very systematically. फिर एक जगह पे plaint, pleading, written statement, है ना? ये भी systematically ही आता है। ये सारी की फिर examination of the parties. So if you go to see from order number 1 to order 10, everything is going very very systematic. Afterwards also till in fact order number 21, you will see everything going very systematically. फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसे add on की है, वो हम कल करेंगे। कल मेरा इरादा है कि आई कंप्लीट विथ यू ऑल ऑर्डर नंबर 11 से लेके 20, 21, 22 जितना भी होता है, so that by Friday Saturday we can complete CPC, right? We may end the class now and जितना हमने आज किया है वो एक बार देख लीजिएगा। मैंने आपको थोड़े फोटोज भी डाले हैं। और काजल, मैं वो वाला मींस मैंने मुझे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ मेरे पास है, वो कौन से टॉपिक में था मुझे तो याद भी नहीं है। किस में है वो मैंने पढ़ाया था काजल? अपील में। हाँ, ओके फाइन, जस्ट लेट मी सी, आई विल जस्ट ओपन अपील एंड अगर सामने ही है तो मैं अभी भेज देती, बिकॉज आई समटाइम्स फॉरगेट थिंग्स। आई हैव रिटन इट, मेरे पास है वैसे तो, हाँ सामने ही। आई जस्ट सेंड इट राइट अवे ओनली बिकॉज आई समटाइम्स फॉरगेट, इट्स माय फॉल्ट ओनली। मैं अभी ही भेज देती हूँ। व्हाट इज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ? Yeah, so this is it. We'll stop over here.